Sergio. Yeah. Ser means big and Jer is born. You see, born with you is the right to achieve this yoga. Right? This yoga is the union with the all-pervading divine love. So first, you have to take it as a hypothesis, but keep your minds open. If it exists, there is a power which has come to us, this knowledge has come to us from ancient times, from seers and Greek saints, right from Markandeya, Adi Shankaracharya. Then we had in the 12th century Ganeshwara, who was described in the 6th century. Then we had Kabira, Nanaka, Namadeva, all of them. All these saints have done the Sahaj Samadhi. Ti means awareness, Samadhi means where it has become united with the all-pervading power. Now this is our heritage. See, this cannot come from the British. See, they are still primitive as far as our spiritual life is concerned. They're so primitive that recently there was a big quarrel whether the women should become the priests or not. Up to now, I mean, in India, woman is regarded as a Shakti. So, I mean, as far as spirituality is concerned, they do not have much idea. Now, this is our heritage. It's from ancient times, it has been with us. We have three types of, you can say, search by people. Three institutions, you can say, or three types of people who are searching the truth. Perhaps our country is so good that we can live in a forest. You see, in England, if you have to go out of the house, it takes half an hour to dress up yourself. You have to always fight with the nature. But our country is so congenial that people could live in the forest. They don't have to worry about all these outside things. And so this knowledge was, we can say, was of three types. First one, by which they went into the search of all the creation. Why this creation was done, I mean, all on the material side of it. So that's how we had, since long, all the idea about all our antarikshas, all the heavenly bodies that we call as anything, all these things they knew. The astrology has come from India. So they knew about the stars, this, that, everything. Apart from that, they wanted to make the matter work out. And hence, they would do those havanas according to the Vedas and all that. Because they wanted to utilize the matter as for science, just like science. But their style was different. Now, people won't believe if you say we had vimanas and all that, but we have these words. So people don't want to believe because we are supposed to be most primitive people, according to them. But we had all these things. All these sciences gradually were built up by these people because they wanted to excite through mantras those matters. There is words like Anu, Renu means Anu means Renu is an atom and Anu means molecule. So we had all these words within us. We knew all these things. But everything disappeared in a way.
So this was one side where they used Vedas. But even in the Vedas, it's written that by reading this, if you do not get Vida, now Vida is a word, Vida. Vida means what? Vida doesn't mean know through your brain, no, it doesn't mean that. Vida means you should know on your central nervous system. As you can see me, you can feel me, in the same way you should be able to feel this all-pervading power. That is Vida. Another word which was used by Bodh, like Buddha, Bodh. Bodh is the same, that you should know it on your central nervous system. That is Bodh. So this Vida and Bodha, these things you should have. If you are reading Vedas, you should get that. Otherwise, no use. So, what was the thing is that scientists must be realized souls. They should be evolved souls. This was the thing. Then came another kind of worship. Call it a left side worship, is bhakti. Because, you see, people were not bothered so much of material things in India. So they were all searching. So they thought there is some higher power which works on, because they saw the saints and all that. And saints told them that you may do bhakti. Bhakti of God, by which you will keep your life pure. But these days bhakti has no meaning, because with the mouth you say something and do something else, so it's different. But in those days, they used to do bhakti, and by that they used to remember what they are supposed to do. What should be the lifestyle? What is good for you? What is bad for you? So this bhakti started. But there was another third one. This was called as Nath, in the center. First one was right side, the other was left side, and this is in the center. And you'll be surprised that in this Maharashtra of yours, these Nathpanthis were. And these Nathpanthis, they believed in awakening the terrestrial power called Kundalini. By which they could transform their disciples. So this knowledge was mostly in Sanskrit language. 6th century Adi Shankaracharya talked about it, but all in Sanskrit. Now, general public did not know about Sanskrit. But also they had a tradition that one guru will have only one disciple, only one, till the 12th century. Now, this Guru Nanaka came much later, but before that, Janaka had only one disciple. His name was Nachiketa. From that time. Then, in the 12th century, Gyaneshwara, tremendous personality. At the age of 23, what he has written, I tell you, if people don't know anything about spirituality, really can get lost. It's tremendous. Now, this Gyaneshwara asked permission from his guru, which was his brother, that you should allow me at least to write it in my Gyaneshwari. At least to write. I'm not going to tell them what it is in a way that I'm not going to work it out. But let me tell the masses. So he wrote it in Gyaneshwari in the 6th chapter. 6th adhyaya about Kundalini, very clearly. But because, you see, the Dharma Markandas, those who were in charge of religion, could not accept it because they could not do it. So they said 6th chapter is Nishita, means not to abandon, not to be read. So the whole thing went into another darkness. Because, you see, these Dharma Markandas were fundamentalists and they didn't want something real to come up. But they didn't know what to do. Alright.
Men came after that 16th century was full of saints in this country. Not only in Maharashtra, everywhere. Even in Punjab, you know that Guru Nanak was there, Kabira, Ramanand, Shyamanand, so many, all over. At the time of Shivaji, there was his Guru was Sri Ramadasa. You see, all full of it. And they all talked about Kundalini. They asked Ramadasa, how much time will it take for Kundalini to rise? So he said, that moment. But there should be a person who is a giver and the one who wants to take it. That moment it will work. So these are our authorities. We should not go to these modern writers about Kundalini. These are our authorities to talk about it. But as it is, there are very few people who got realization. Kabira has throughout written about nothing. He says, Surati he called, Kundalini called Surati. Now can you imagine human beings how they are? Surati is now is the name of Tambak. What do you say to that? In Bihar where he worked, they called Surati Tambak. See the perversion. Like that you see. Then Kabira, not only Kabira, but then Namadeva. He went from Maharashtra to Punjab, and Guru Nanak respected him, and he has written such a big book, I see, such a big book. In Punjab. In Punjab. And many of his poems are in Granth Sahib and also of his maid, Janaki. They are in Granth Sahib. Because Guru Nanak thought best is to collect all the verses from all these saints and put them together. Not to write anything else but what they have said. So he keep it pure. And that's how Namadeva could write. I mean, he learned Punjabi language and he wrote all these things in Punjabi. So that is how it came. But they all have talked about, like Guru Nanak has said, Sahaja Samadhi Labha. Sahaja Samadhi Labha. You can say Sahaj means spontaneous or easy. But I have told you the meaning of the word Sahaj. But everything, you see, once it is in the book, I've seen that people think by reading book, you can get the results. It's like this, if you have a headache, and I write it down a prescription for you now, take Anacin. If you are reading, take Anacin, take Anacin. The headache won't go, it will be worse even. It's like this. So all these books, you see, has put limitations in their research. Because I have seen people do Akhand Ramayana, Akhand Gita Path, or Akhand Granth Sahib. They go on Akhand. Means just go on reading. But what they have said, they have not seen. Nanak has said, Kahe re vana bhojan jai. Why are you going to the jungles? He says it is within you. Why are you going to the jungles? So all the saints had to suffer in a way because nobody understood. You see, the report has to be established. Nobody understood. So this Kundalini awakening, it's a residual power within us. As you know, we have 3 autonomous nervous systems. One is left side and the right side sympathetic, and in the center we have parasympathetic nervous system. And whatever we have achieved in our evolutionary process as human being is expressed by our central nervous system. Alright? Like, you see, if you want to take this dog through a dirty lane, he can go, we cannot. I mean, we have conception of beauty, we can see beauty, we can understand colors, he does not. So in evolutionary process, whatever we have achieved is expressed in our central nervous system.
Now it should be treated as a hypothesis to begin with, see, because you should not take it for granted at all, but as a hypothesis. Now this Kundalini resides in the triangular bone, which is called as sacrum. That means the Greeks knew that it's a sacred bone. It's a Greek word. Sacrum is a Greek word. It's at the base of the spinal cord. There is a bone, triangular. This lies in that. And above that are 6 centers. Below that is 1 center. Below that is the center, which we call as Muladhara. Because Kundalini is the mool, means you understand root. Kundalini is the root. So, because it's the support of the root, Muladhara. Now, in the medical terminology, you can understand that this center looks after, on the physical side, our pelvic plexus, which deals or which functions for all our excretion, including sex. Now, this is to be understood very clearly, that it is like below the Kundalini. So sex does not play any part in rising. It's a very important. But later on, as people have really perverted the whole thing, and I don't know, all kinds of things they have done, and they said that it is the sex energy which has to be. There's nothing like sex energy or anything. It's like any other energy. But only thing is that this energy is used for a particular purpose of excretion or can be expression of your desires or whatever it is. But it has nothing to do with the ascent of the Kundalini, nothing to do. On the contrary, when the Kundalini is awakened, this center absolutely stops it. No excretion of any. You'll be surprised, we have sometimes program for 10 hours, 11 hours, I don't go to work. It just stops. That's why Christ has said you have to become like children to enter into the kingdom, because this is the innocence. Now this is going a little further, is that on the center is placed the deity of Sri Ganesh. It has a great meaning. What is Sri Ganesha, how he is placed there, and all that's a lengthy stuff. But I told this scientist in America that this center is made of carbon atom. And carbon atom has got 4 waves. Now if you see this center as a carbon atom, you make a model out of a carbon atom. And then you watch. If you see this one, how about for very project, that's it. That scientist is here. So if you see it from right side, on the left side, what you see of that atom is a swastika. Clear? In the microscope. It is brought in the regular. Now, Johan, you just show them it. See, it is that. Just show them. They are journalists. He's made this.
ये लोग बड़ी मेहनत कर रहे हैं, जो भी हम करें, they want to, say Shuddha. So if you see from left side to the right side, you see a swastika. Shuddha swastika. ठीक है? अच्छा, then if you see them, see it from left side to the right side, you see Omkara. अच्छा, if you see from down upward, then you see Alpha and Omega. Alpha and Omega. See now. Now this I stated in one of my lectures. These people immediately jumped onto it. They took a atom of carbon, took the model, made it. हमारे बहुत से scientists भी है ना. Now he's made this out of that. It's beautifully made. But first they made a huge big thing. And what Christ has said, I am the Alpha and Omega. That means these symbols, Alpha and Omega, which we use in our mathematics, are very ancient. So Christ is incarnation of Ganesha. It's a scientific proof. This gentleman must come and sleep here with me. अब ये हिलेंगे नहीं, सो गए, दुख गए, आराम से, ये हालना महाराज. So Ganesha is an eternal child. That's why he has got the trunk of an elephant. His innocence is our innocence. So when the Kundalini rises, when she is awakened, just she can be awakened somehow. I must say that this modern Surya Yoga, only thing if I have discovered anything is this, that en masse awakening of the Kundalini, en masse. Thousands can get away. That's all I have discovered, nothing much. But this is a very ancient science. They used to give it to one person, two persons, then some, but now it can be done. Like in Russia, we always have program in a big stadium with 16,000 minimum people. And practically everybody gets realization. Russians are the best. I don't know what communism has done to them. They are not at all idiotic, you see. They are not American style people. They are very straightforward and very introspective. And they didn't have these stupid choices that democracies had given. See, like in America, even a lock has to be different, even the tiles have to be different, even the door of the car is different, the handle is different. I mean, if you get into their bathroom, better ask them how you get in. I mean, everything has to be different. The choices are so magnificent. And they are all the time busy, what should we do? Something more to show that we are something different. The whole energy is wasted in that. These people we provided for all material things practically. Of course, that made them a little lethargic and careless. But on the whole, they were not bothered about politics. They didn't have to worry who is coming to be as chief minister, who is this, nothing of that. So, you see, their attention was introspective. On the whole, they are always being. Because if you see Tolstoy or any one of their writers, you have read Crime and Punishment, you can see how introspective even the hero was. It's a wonderful knowledge of these people that even the hero would introspect before falling in love. Why I'm falling in love, what is the thing? But it's wonderful. So these people are very introspective. And so in Russia it has become extremely, extremely successful. But all other your gurus and all of them went, nobody could manage. No. They wouldn't accept. And they have a sense also, I think, what is the truth and what is not.
Moreover, anybody who asks for money, they don't like. They understand that how you cannot sell spirituality. They understand. Not in India even, we don't understand this. Of course, Americans never understand. The more you charge, the better it is. They will say like this, it is certain Sadhguru, very good. These days he's having a sale. It's all shopping, it's all marketing. But they understood it. And we have now 200 doctors here for practicing Sadhguru. And the scientists, 300 of them invited me. And when I started talking about science, they said, no more science. But we have had enough. We have reached to the last end of it now. We don't want anything of you. You tell us about God's laws, divine laws. Please don't talk about science. Now they also have become like this. He's from Belgium, but was working in the UN in America. So what happens when the Kundalini awakens? It passes through 6 centers, as I told you. The first is establishes your innocence. That's the support of the Kundalini. Then it rises through 6 centers. Now on the physical side, we suffer because our centers are out of gear, because of our extreme behavior. So, this Kundalini, what she does, now these are the centers, for example, so the left and right sympathetic, they combine and form a center like this, you see, in the spinal cord. Now what happens if you start using too much your right side? Means if you have very futuristic planning type, I mean, general disposed, so you start moving more towards the right. Alright. Those who are very emotional type and all that, they move towards the left. Sometimes something can happen, they can just spread. And things like cancer, incurable diseases, or what we call psychosomatic diseases can be caused by this kind of an imbalance line. Not that even if you are on the right or on the left, if you go too far, you might get those psychosomatic diseases, which are supposed to be incurable. Now, this Kundalini, what she does, she goes through here, then she passes through here, and just like we put the beads into what you call threads, in that it goes on threading on. So she integrates our center. Like see, normally if you want to do something, you desire to do something, but maybe your intelligence will say no. Or maybe your attention may not be there. But then you become an integrated personality. Whatever you do it with your heart, with your brain, you are completely integrated. There is no problem with that. First is that. But what is the outward manifestation is that once she crosses over, first the dilatations of the pupils take place and a kind of a glint, there's a little shine in the eye comes in. And then it pierces through here, which is the fontanelle bone area, which in our language we call it talu. Sanskrit talu, here talu. Hindi में तालु कहते हैं, मराठी में तालु होता है. This thing suddenly opens out and it comes out, and that energy becomes one with the subtle energy, this all-pervading power. So now first we have to accept one thing, is that first truth is that there is all-pervading power which does all living work.
We never question who does living work. How do we grow? How does a seed becomes a tree? We never question, accept it. Look at our eyes, what a camera. Look at our brain, what a computer. We never bother to question from where do we get it. See, this is done by this all-pervading divine power. The second truth is that you are not this body, mind, intellect. You are not, because it's a my intellect. You will say my heart, my body. What is your self? Is the spirit. So you are the spirit. The rest is my this, my that. My mother, my sister, my house, my body, my eyes. So who is this mind? Who is this I? Or who is this auto? Is the spirit. So this spirit you have to. So far your attention is on the body, your attention is on your eyes and everything. Then what happens? As if you watch a house from outside in the beginning. And then though you go inside, and from inside you watch. So the whole awareness becomes very different. This we call Turiya. In Sanskrit is called the fourth dimension. We live in three dimensions. This is the fourth dimension we get. After Kundalini is a Fourth dimension. And the fourth dimension, what do we get in that dimension is, firstly, you stand in your present. Now, for example, we can think of the future or of the past, but in the present I say, now be in the present, you can't. So what happens? You become thoughtlessly aware. You are aware, but absolutely no thought. Because thoughts come to you from the past or from the future. In between these thoughts, there is a little space. So when this Kundalini rises, she makes that space. And that's the space, is the present, Vardhaman. And in spiritual life, you grow only in the present because that's the truth. You see, the past is finished, the future doesn't exist. But in the present is the reality. Now it's sitting with me is the reality just now for you, isn't it? You don't know what will happen in the future or whatever past is finished. So first in your dimension, you become thoughtlessly aware. But the second thing that happens to you is very wonderful, that you start feeling this all-pervading power on your fingertips. As very gently cool breeze on your fingertips. Adi Shankaracharya has called it the Salilam Sati. Even Christ has said, cool breeze of the Holy Ghost. Kundalini is the reflection of Adishakti or Holy Ghost in human beings. As a result of that, all these sympathetic nervous system, these are the endings of the sympathetic nervous system. The left hand side 7, 5, 6 and 7, 5, 6 and 7. So the left side is emotional side, right side is your physical and mental side. We give you the book so that it's easy for you to understand. Now, then you can start feeling not only this power, but you can start feeling others. I mean, in American scholars say vibes, you see, they don't know what they mean by vibes, very good vibes. But actually when I went in 1972, there was one Mr. Chaudhary, he said, "Mother, you get all these things registered or something." I said, "For what?" He said, "They are writing down all your things and they'll propagate." I said, "Very good idea. Very good, I mean, read it, I will propagate, nothing wrong with it." But awakening has to be done now, first of all. That's the main thing. That has to be done. If you just take my words and write it down, what is that? I don't want to become the monopoly of that. It's very good if everybody can do it. As a result of that, look at now. Feel the centers of yourself.
So this is the self-knowledge, and you can feel center of yourself on your fingertips. Can feel what's wrong with you, what's wrong with you, what's wrong with you. You don't have to tell anything. You just know that it's wrong. Now, somehow, if I know how to correct the centers, you can be cured. Because all diseases, mental, physical, emotional, all of them are due to this. And also spiritual problems. Because if you go to wrong gurus, this, that, you get spiritual problems. False people. So a new dimension in your awareness comes, which we call as collective consciousness, collective samuhik chetana. So now who is the other? I can feel you, I can feel her, I can feel it. So who is the other? You become part and parcel of the whole. And another great thing happens that on your fingertips you can feel absolute, absolute, which cannot be challenged. Absolute. Say you have 10 children with their real eyes closed and tie up their eyes. Now ask them, what's the matter of this with this lady? What's up? They'll raise one finger. You ask the lady, have you got throat trouble? How do you know? Because this finger suggests. Everybody will say the same. Like in a program, one man came, why everybody is asking what is your relationship with your father? What is your relationship? Why have you bothered about my father? I said, this is center. You are catching on that center, the right heart. That's why they are asking. Everybody asking, yes, of course, because they are feeling it. So everybody feels the same. Now you want to know about anybody, say, about Christ. Was he the Son of God? Just put your hands up. But somebody is a thief, say, or a false one. You put your hands. Just, even if he is not, immediately you get burnings. You get these little pins and needles. Or you might even get sometimes little blisters. They disappear. So you become like Bharavata. Now imagine how fantastic you are. This is outside. And inside you get completely transformed. We have had people who were supposed to be like burning fire as far as the temple was concerned. They have become now like Himalayas. So people have changed, apart from the health. We have definitely seen so many people cured of blood cancer, ordinary cancer, heart cancer, so many. I mean, there are so many that, now Rahul Bajaj here, you can ask him, he had a massive heart attack and he got cured with surgery. You wouldn't believe, he went to Houston and then Dr. Cooley shouted at him. So it is like that. So many people have been cured. But it's not anybody's power, it's your own power which cures. It's your own. It's within you. It's your own power. As a result of that power, which is actually is your own mother. Everybody has an individual Kundalini, own mother, and she gives you your rebirth. She looks after. Let it be, you won't leave me. This problem met me after a long time. So this Kundalini will not only cure your incurable, so many have been cured that you won't believe. But now we have doctors in every country who are practicing such.
making research. So many miracles that I told him, all right, write it down. Within 1 month's time, the fellow was writing. I read them like this. He said, Mother, which one should I write? I said, let's do it to read all. So many people have. Automatic. It has any applications in AIDS. Huh? Sahaj Yoga can help AIDS. Influence. AIDS. Can it cure AIDS? Just can. It can cure It AIDS. has cure. It has cure. See, we cured 5 people in Austria, out of which 2 were husband and wife. They were Catholics, so just disappeared, but they are all right. Third and the fourth, both came from TL, transcendental meditation. But they developed this, they were called homosexuals. Even after getting cured, they went back to the same habit. So they got it. But one fellow we still have, who is still surviving for 8 years, gone very healthy and heavy, is doing well. He is in Australia. The trouble with the AIDS people I have seen is, they have no willpower to you see what we call the centered heart means they are so insecure within themselves, so insecure that you see after getting cured also you have to little bit keep to certain pathyaji policies. You have to. But they don't. They are then indulge into this homosexuality. Or they are outside they show we are like martyrs of each other. Inside they are very. So it happens like that. If they really want to live, they can. If they really want to work it out, they can. But with Sahaja Yoga, you can never get peace. That's one thing for granted. Because all your priorities change. With Sahaja Yoga, the doctors are now, I should say, neglected. Nobody goes to any doctor. He knows all these things. It's fine. The doctors are finished now for as far as surgeries are concerned. So they, at the most, they might get some cold or something at the most. But they are so healthy and they are so energetic that you can't imagine how a person could be like this. Our Rajesh now. There's Mukunda Iron Works, this is Rajesh. He was not sick, I would say, but used to get too much cold and rash and all those what you call allergies and all. Now he's such a dynamic fellow. Today he'll be in Germany, tomorrow he'll be in Japan and all that. But you see, so healthy and so happy and so relaxed. He'll become absolutely a relaxed person. Balanced. Huh? Balanced. Balanced, very much. And above all, compassionate. Very compassionate. Now, all these Sahaja-yogis who have got Sahaja, they are swimming in the ocean of joy. But what their headache is that, Mother, why not have more? Why not get more? I am traveling, I went to South America, I am traveling all the time at this. I am 70 years now going to be. I am traveling all over, all the time. But what am I to do? If people want to come, I am there to do this. But if they don't want to come, what can I do? So this is the trouble, that they are so anxious that more should come and they are running up and down and you see all over the world they are running, here to there and they are trying to find out more people. Even in Maharashtra now, there are lots of people going in the villages and getting people for surgery. So it's a very, very big, I should say, countrywide propagation. Every country. The least is in, I'm sorry to say, but in America. Mataji, it promotes longevity. Huh? Sahaja Yoga
no doubt about it. Whenever you want to die, you die, no doubt. But you see, actually we become so detached about it. You don't worry about your health, you don't worry about your age, you don't even think about it. You feel very young and all the time you're very active, you just don't feel it. And there's no group like the young, old, I mean, we all enjoy together, whatever may be the age, a small boy or a, adolescence and all that, that doesn't exist. Also, it doesn't exist in a religion as far as the outside religion is concerned. Nothing. For example, we worship Rama, we worship Shri Krishna. Also, we worship Muhammad because he was the third. They don't know, but we know. He was the third. And Fatima we worship because she came as Sita later. So we worship all of them. We know that. It's not just Sarva Dharma Samobhav. Even Gandhiji was not like this the way these people do. Gandhiji in his prayers, because I was with him from my childhood, and actually I helped him in writing his sequence of Bhajanavali. All on Kundalini we wrote. He was a realized soul, no problem. But you see, we were fighting for freedom that time. And he said, without freedom, what is spirituality? Now, so Gandhiji's if he was living today, he would have definitely helped me a lot. Even Lal Bahadur Shastri was a realized soul, another great realized soul. But we are very unfortunate. We lost him. Even Gorbachev. But Gorbachev. Even Gorbachev is a realized one. yes, he is a realized soul too, Gorbachev is. But his wife, I don't know what to say, but don't write it. See, he is a very high level person, very good person. He's done his job, no doubt. So now this, I was telling you about Muhammad. Gandhiji. 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 Gandhiji, yes, and he was a realized soul, no doubt. And he was the one who believed in Sarva Dharma Samabhav. And in his Sarva Dharma Samabhav, he made everyone worship. Everyone. Like a Muslim, maybe a Congresswala or anybody used to come to the ashram, he had to say the mantras of Sri Ganesh. He had to say the mantra of Vishnu, Saraswati. You see, that is like this. It starts with the, first of all, whatever in my heart is the Hridisauch Puratmaka, you see, the spirit. Then he starts on Ganesha, then every week. Then he goes to the Quran. And you have to say the Quranic thing. And then you have to say also this from the Parsi, this thing. Yes. All that you have to say. So you have to worship all of them. He followed such style. You see, if you just say Samabhav, means you don't worship. Why don't you worship? Everybody should worship all of them because they are different. They are not politicians or anything. They are all related to each other. Like I said, those who are not against us are with us. Even Muhammad Sahib said also there have been 1 lakh of Nabis. He respected Christ's mother more than Paul did. Christ's mother. He said she is a holy woman. But Paul is the one who ruined Christianity. Paul. There's so much to be said. But all in the way they ruined everyone. Human beings are very good at ruining everything that is sublime and somehow or other, humanity. But if you see the essence of Christ, as I told you now, essence Alpha and Omega, I should go in it. Christ resides in our Agya on the 6th center. Christ. Very important.
How do we? Yeah. How do we? On the cross, on the optic chiasma. See, the optic chiasma is there, and it looks at one side is the pituitary, and another side is the pineal body. Now, pituitary looks after our ego, or the whole of it, our working, physical working, and the pineal body towards our conditionings. Chinese is that Yin or Yin Yang. India. India. Two things, see. So one is Yin, another Yang. He looks after both of them. One is a ego and another is superego, is the psychological terminology. So one is the ego and another is the conditioning. So these two balloons grow up like this gradually and they cover us, cover our head. So when they cover us, we are cut off. As children we are one, but we don't feel it, but we are one. But when the Kundalini connects, then only we can feel it. Now see for example this instrument or whatever it is. You have to put it to the mains, otherwise it doesn't work. So you can call this as the Kundalini, which is in a coil, and some of its threads come up, open this and connect you to the mains. It's subtle, very subtle. How do we live? Let us see. We live in 3 dimensions. Like I'm here and I'm looking at the mirror. Alright. So I'm the one who is observing. And my reflection is what I have observed. But there is a action of observance. So there is an observer, observed, and also the observance, which is the kriya, which is the activity. We live in this time. But supposing you become the mirror, suppose, then all these things drop out. That is what is called as the witness state, Sakshi Swarupa, where you just watch. The whole thing is a drama. Whole thing is a drama. But when we are not realized, we get lost in the drama. अच्छा ने काटा तो नहीं, अच्छा ने काटा नहीं बच्चे तो काटते हैं लेकिन यहाँ है थोड़े थोड़े ज़्यादा ज़्यादा तकलीफ नहीं देती। अच्छा. So we become ourselves, means we know ourselves. We don't have to take a mirror, but we know ourselves. To know yourself is the only point. And this is our heritage. This is the most important point we Indians must understand. Or when they come, they come and touch our motherland and say namaskar. Some of them kiss these foreigners. Because this is your home. Because they know what it is. I sent them to Dehuru, to Karams. And the other surgeons told me whether they were just rolling on the ground. I don't know what they were. So I said, what were you doing there? They said, all over vibrations coming out of the mother earth. So we are rolling on them. अब इनके बताएंगे बैठे हैं कि हमारे यहाँ सब कुछ चीज़ है, लेकिन इनकी गहराई हम लोगों में नहीं। जिस चीज़ में पड़ जाते हैं इतने गहराई से पड़ते हैं कि आप हैरान हो जाएंगे। Overnight people have given up drug addicts, alcoholics, overnight. हिंदुस्तान में नहीं, यहाँ वहाँ, यहाँ तो तंबाकू ही नहीं छूटी, कम से कम 1 महीना लगेगा उनको तंबाकू छूटने। पर ये ओवरनाइट। अच्छा, इन्होंने पूरा सर्च कल्चर ले लिया, वेस्टर्न कल्चर छोड़ दिया और इंडियन कल्चर का नॉनसेंस छोड़ दिया, सर्च कल्चर में।
They have really become righteous. They have really become religious. अब कुछ गलत काम करते हैं। मैंने कभी नहीं कुछ कहा. I never told them. ये नहीं करो, वो नहीं करो. I never told them. Because once you get the light, you know what it is. No? Like if you have a snake in your hand, if you are in the darkness, you can't see. You can say that this is just a rope. But once you get the light, you just leave it because you know it's a snake. That's what happens to them. एकदम, you see, they become so samarth, they become so strong. Samarth. But they give up aggressiveness. They are not aggressive. In their silence, they become. Wow. My husband used to always say that you are Rauji, but you cannot make anybody resonate. Now he says so many angels around, he has to accept. I had to work out for years together what is the problem, why we cannot have our mass realization. The time has come. I worked it out. Now in our country, especially the young generation has no destination. They don't know what to do with themselves. ये करें कि वो करें बेचारे. If they take to Sahaja Yoga, now see in our Sahaja Yoga, Vivashan, nobody is unemployed. All boys get first class first. All. Very well educated. All girls get married. Now we also have marriage system. Now Pune, I think, कितनी लड़कियां इस साल शादी में होगी? 84. नहीं, 84 marriage is. लेकिन Pune से भी कितनी लड़कियां? 30. हाँ? 30 Indian girls. 30? Indian. 13? Yeah. From Pune only? Yeah. They are all abroad. So many boys got married are abroad. Because selection. हाँ, किसको सर? ये है क्या? ये तो बच्चे? Yeah. बोला? अब क्या? पूरा क्या बोला? Elizabeth. She's from Australia. गोड़े बोला. Mataji, you take a personal interest in these marriage alliances? तो पर आप खुद ये करवाते हैं रिश्ते? ये बेटे पहले क्या करते हैं कि महीना भर पहले आते हैं तो हम उनके वाइब्रेशंस देख करके हाइट उनकी जो उनको फॉर्म्स होते देख करके तय करते हैं और कभी तुम्हें पसंद आ जाए तो आखिर तक तुम्हारा चॉइस है पर वो उनको पसंद आ जाए तो शादी कर देते come in I'm just telling them hello she's got hope outside I'm just telling them how you people are married to Indian boys and how Indian girls are married. बहुत पढ़ी लिखी हैं. And how you are enjoying your life. Yeah. It's good, the two cultures together. It's very nice. यहाँ अपने सास ससुर की सेवा कर पाएंगे. Means balance is more there. Means with two Westerners together, tend to be more on the right side, always acting whatever. But with the two cultures there, it's very nice. Means you get the best of both worlds. And enjoy both sides. और मुँह पे तेज देखिए इनके भी और उनके भी तेज कितना है. और इनकी तबीयत ठीक है थोड़ी सी. और she got cold है. Nose is... Yeah, Yeah, she loves pins. I She's think she's going to be a big writer. अभी इस टाइम 84 शादियों और करीबन 10 साल से और इंग्लिश की अब Yeah. हाँ तो आप सोचिए हर साल 70, 75 ऐसी इस टाइम 84 शादी उसमें 3-4 फेल हो गए. उसकी बात ये कि हमारी हिंदुस्तानी लड़कियां ही कर पाती ये लोग नहीं करते. अभी एक लड़की गई थी उसने अपने हस्बैंड को थप्पड़ मारा महाराष्ट्र बताइए. और ये लोग इतने शौक से शादी करते हैं
कि हमें इंडियन लड़की चाहिए, वो तो हम लोगों को सबको लक्ष्मी समझते हैं। और इस लोग ऐसे तमाशे 3-4 शादियाँ होती कितने इसमें। इतने प्रेम से रखे, उनके बच्चे बहुत प्यारे हैं। माता जी, एक बार आप सहज योग में आ जाते हैं, जो पहले बुरे कर्म किए होते हैं तो उसका एक्शन वाइप आउट होते जाता है। Because your ego is finished. You see, a dog doesn't think he's doing bad karma. Only human beings say. Because we have ego, we think we are doing it. The whole ego and the superego, both of them are sucked. And all your karmas are finished. All karmas are finished. One goes beyond the influence of planets. Yes, in of सहज course. योग. You go beyond that. If they have an effect. Huh? If they have an effect. If at all they वो effect करते हैं planets, human destiny को. After, not after realization. But do they affect? In the beginning, but before that, they do effect. Before, not after. जब जानकी नाथ सहाय करे तब कौन बिगाड़ करे नर तेरो। Nothing. एक साल से बताया गया कि आप मर जाएंगे 1 साल, वो अभी तक जिंदा बैठे, सालों हो गए, 25 साल हो गए। तो जो लॉन्जिविटी की बात आपने करी, आप लोग मराठी बोलते हैं कि हिंदी बोलते हैं? हिंदी हिंदी बोलते हैं। पंजाबी ये महाराष्ट्र पंजाबी तुम्ही मराठी सगळ्या एक सारख्या दिसतात मला काही कळलं नाही, बरं आहे. और ये हिंदी बोलते, पंजाबी। अच्छा, मैं भी पंजाबी जानती हूँ और हिंदी भी जानती हूँ, मराठी भी जानती हूँ, इंग्लिश। आपको कितने लैंग्वेजेस आते हैं माता जी? अच्छे लैंग्वेजेस। कभी मैं कुछ सीखी नहीं, इंग्लिश तो कभी पढ़ी नहीं मैंने, क्योंकि मैं मेडिकल स्टूडेंट थी पहले और मराठी स्कूल में पढ़े, मराठी वर्नाकुलर स्कूल में। हमारे फादर बड़े भाई नेशनलिस्ट थे, उनका उसने अंग्रेजी तो आई जाती है आपको, तो आप मराठी स्कूल में पढ़े, तो मराठी स्कूल में पढ़े। फिर साइंस कॉलेज में कुछ थोड़ा सा बहुत, मेडिकल में गए तो कहाँ से आए, तो ना तो खास हमने इंग्लिश पढ़ी ना हिंदी तो कभी पढ़ी नहीं। फिर आप सीख गए। पढ़ने का शौक है, पढ़ने का शौक होना चाहिए, व्यासंग जिसे कहते हैं, उससे होता है, बहुत ही पढ़ने का शौक। और हेलो, डांस डांस देखो, कुर्सी का पता नहीं थी, पर नाक पे लगा देंगे तो चला जाएगा। ऐसे प्यारी है लोग, और हमारे यहाँ वो प्रॉब्लम्स बिल्कुल नहीं जो होते हैं कि साहब ये हस्बैंड उस औरत के पीछे भाग रहा है, उसके पीछे भाग रहा है, लड़के के पीछे लड़की भाग रही है, इसकी प्योरिटी आ जाती है। ये होता ही नहीं हमारे, पता नहीं कैसे हो गई। वैसे अब हमारे हस्बैंड तो आप जानते हैं ना कि he was in the government service, जो वहाँ चले गए, ये होगा। ये डिप्लोमेटिक सर्विस में तो इतनी प्रॉब्लम रहती है, बस इन लोगों में कुछ कैसा जरा सब बिल्कुल शुद्ध मन की, कोई लड़की को नहीं छेड़ेगा, कोई लड़के को नहीं छेड़ेगा, सवाल ही नहीं होता। I'm just saying how chastity is born in you after surgery. That's right. अब ये लोग पीते थे खूब, सब धंधे करना, ये वो उस कल्चर के लोग, ये उठ के बैठ गए ऊपर और ऐसे खटाक से हो जाते, मेरी समझ नहीं। मैंने कभी इनसे कुछ नहीं कहा, ये नहीं करने का, वो नहीं करने का, नक्की। पर आपके अंदर अच्छाइयाँ बहुत है ना, lot of beauty within yourself, lot of glory or knowledge. See, actually we are experiencing ourselves as something very small. We don't think what we are. See now, for example, if you take a television in our remote village and show them and tell them this is a very fantastic television,
and it will show all kinds of things. They will not be. But you put to the mains. The same way we are built in life. The whole glory comes out. We are wonderful. सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाता है, सब आ जाता है, और उसमें एरोगेंस नहीं है, एरोगेंस नहीं है, शार्पनेस आ जाती है। अभी हमारे यहाँ जितने लड़के हैं, चाहे वो मेडिकल में है, इंजीनियरिंग में, सब फर्स्ट क्लास में पास होते हैं। ऐसे लड़के जिनको बताया गया ये बिल्कुल बेकार है, इनको ले आए और फर्स्ट में पास हुआ, स्कॉलरशिप दुनिया भर की कमाल है। माता जी एक बार कुंडलिनी अवेकन हो जाती है तो वंस कुंडलिनी इज अवेकन वो परमानेंटली अवेकन रहती है? नहीं बेटे, ये तो बात नहीं कह सकते हम, क्योंकि इट लुक्स आफ्टर योर हेल्थ, इट लुक्स आफ्टर योर माइंड, सो व्हाट हैपेंस, इट गोज टू वेरियस प्लेसेस, looks after, but you have to work it out that you fix it properly. वो करना पड़ता है, that's a little, some people of course, some people once they realize, उनको कुछ पकड़ते हैं, but some, आजकल का ज़माना भी ऐसा है ना, one has to keep going. So little bit, sometimes ego will come up, sometimes your super ego will come up, little bit they try to, but if you know how to, little meditation say, you can put yourself right. तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो एक बार हो गए सो गए, स्पेशली विलेज के लोग सीधे साधे होते हैं ना, उनका इतना संबंध नहीं आता है सब चीज़ों से, फट से हो जाता। अब हमारे कुक साहब आए मेरी डॉटर के हमको, पहले मुझे भी जागरूक दी दीजिए, तो 1 मिनट में पार, और तब से मजे में वो तो प्लीज कैजुअलिटी हो रहने वाले बहराइच में आप भी हो गए तीनों पार, अभी आपको पता नहीं है, हो गए हैं, आप ऐसे करो बंद करो, दोनों पैर ऐसे रखा करो, चप्पल तो नहीं पहने, सॉक्स निकाल, जूते उतारो, सॉक्स, जूते निकालने, हाँ, जूते हैं, नहीं निकाल दिए, सॉक्स निकालो, सॉक्स है, सॉक्स है, अरे आपको बैठे बैठे आप लोग पार हो गए, अब अपने सर पे राइट हैंड मानो का लेफ्ट हैंड से ये सर झुका के और देखिए यहाँ से ठंडी हवा निकल रही, कभी कभी गर्म भी निकलती थोड़ी, हाँ आ रही, अभी नहीं आ रही, नीचे कर लो, अभी आ रही, just see is not coming, अभी आ रही, एक मिनट, अब ये जागृति दे सकते हैं, आप दे सकते हैं, got it, आ रही है, आँख खोल के रखो, बस आँख खोल के रखो, आ रही है, आँख खोल भी, see her, हाथ हटा लीजिए, वो दिख रहा है, आगे बोल रहे हैं, इसके देखिए, एकदम रिलैक्स है, अच्छा वॉच मी नाउ विदाउट थिंकिंग, जस्ट वॉच मी विदाउट थिंकिंग, जस्ट वॉच, कोई थॉट नहीं, ये पहली स्टेट है निर्विचार समाधि, इतने इजीली अचीव होती है, और इसके बाद है निर्विकल्प, माने जिसमें कोई विकल्प न रहे, डाउटलेस अवेयरनेस, फर्स्ट इज थॉटलेस अवेयरनेस, सेकंड इज डाउटलेस अवेयरनेस। नाउ लाइफ इज चेंज, आप देखिएगा इतने मिरेकल्स लाइफ में भी विल बी सरप्राइज इन एवरी वे, इतने अच्छे लोग आप कहाँ से ले आए जर्नलिस्ट, मैं तो घबरा रही थी, जर्नलिस्ट आते तो पहले देखते कारपेट कौन सा बिछा है, ये वो सो सुपर वंडरफुल पीपल, ऐसे टाइम्स ऑफ इंडिया में पाड़गांवकर जो है, वो इज नॉट हिज रियलाइजेशन, ही केम टू माय हाउस, ही गॉट हिज यूनेस्को को हम वही थे, उनके साथ आए थे, ही गॉट हिज रियलाइजेशन, He's in Tel Aviv now. हाँ He's in Tel Aviv now. In Israel. इजराइल में वो, Israel से
लेख लिखते जा रहे हैं पिछले 5-4 दिनों से। कौन? पढ़गांव? Yes. इजराइल का? Israel में। I don't know. I didn't know. Links with India to be renewed. So he's in That's Israel. right. He came with this UNESCO fellow, Aboi. These people have removed him, मतलब बहुत उनके साथ अन्याय करके उनको हटा दिया गया। He was from, he was a Muslim. Don't they do BN and he? क्या नाम उनकी कंट्री का नहीं याद यार। यदि लंदन में, और उसको हटा दिया ये अंग्रेज से भी पकड़ के ये फ्रेंच बहुत खराब। हालांकि वहाँ हमारे समझ में बहुत फैला हुआ है यंग लोग, और फ्रेंच लोगों को मेरी समझ में नहीं आता। यानी यहाँ तक है कि prostitution is allowed for housewives. Very weak. और वो कैथोलिक चर्च को मानते हैं। और कैथोलिक चर्च में तो समझ में नहीं आता, क्राइस्ट ने कहा thou shalt not have adulterous eyes। और अब कैथोलिक चर्च का भी होने वाला है ठिकाना, क्योंकि they had these corrupt people and they were laundering, हमारा पैसा वहीं से launder हुआ है to मतलब through their Masonic arrangements into Swiss banks। यहाँ से वहाँ जाता है, वहाँ से वहाँ जाता है। तो धर्म के नाम पे भी तो कितनी गड़बड़ है ना, बहुत गड़बड़। हम लोग जब यंग थे तो फर्स्ट के मूवमेंट में हमें पार्ट किया। बचपन से हमारे फादर बहुत बड़े निष्पात थे कांग्रेस, तो हमें उन्होंने इलेक्ट्रिक के शौक दिए और बर्फ में लिटाया बहुत ज़्यादा, क्योंकि हम वहाँ के लीडर थे नागपुर के यंग लोगों में, तो हमें कुछ फील नहीं होता था। और अब आप लोग यंग हैं, अब ये दूसरा रेवोल्यूशन शुरू, so the young people should take it up, because you see, I don't expect any from these old journalists here, so business, इनको तो पैसे की पड़ गई, लेकिन आप लोगों से उम्मीद है मुझे, if you people take it up, it is now your responsibility। हमेशा स्टूडेंट्स ने और यंग लोगों ने ये काम किया, अब तो सिर्फ 18 साल के थे। अब जैसे वंदे मातरम, मुझे दुख ये लगता है कि हमारे फादर हाई कोर्ट में चढ़े झंडा ले, और झंडा वहाँ पर लगाने वाले तो उनको बंदूक से चोट लगी। चोट लगने के बाद भी वो निकल रहा था, तो भी वो चढ़ के उन्होंने झंडा वहाँ लगाया और झंडा एकदम फैल गया, जोर किया वहाँ पीछे सब लोग खड़े, वहाँ खड़े होकर उन्होंने कहा वंदे मातरम। आज उस वंदे मातरम को मना कर, अरे इनको आइडिया नहीं है कितने लोगों ने सैक्रिफाइसेस किए। कुछ आइडिया नहीं। हमारी मदर फर्ग्यूसन कॉलेज के आपकी ऑनर्स मैथमेटिक्स, और फादर हमारे और मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, एनकेपी की मैं बहन हूँ छोटी, एनपी साल में, पर मेरा उससे कुछ नहीं पास nothing to do with it, because I don't believe in these politics। एनकेपी साल में जो है ऊर्जा मंत्री, उनकी मैं सभी छोटी बहन है, जो आपके क्रिकेट विकेट के भी प्रेसिडेंट रहे। और ये मत लिखिएगा, नहीं तो चिल्लाएगा मेरे ऊपर, ये नुकसान है, but because he is a politician, इसी से मेरा समझ। अगर उनकी तबीयत खराब हो जाए, उनको फ्रोजन आम था वो मैंने ठीक कर दिया, किसी बाल ठाकरे का हार्ट था तो उसको ठीक कर दिया, इसको ठीक कर दिया, वो दूसरी बात है। बट I cannot understand this। I am writing a book called as Meta Modern Era, Meta Modern, in which now I have reached a conclusion that democracy is not meant for ordinary human beings। Abraham Lincoln didn't know.
he was a realized soul. It's meant for realized souls or evolved souls. Otherwise, you see, in the name of democracy, everywhere, except for England, I would say, still democracy is not so bad. But आप कहीं भी देखिए, जुडिशरी ठीक नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन ठीक नहीं, करप्शन अपने देश में नहीं, हर एक देश में वेरी करप्ट। इसका क्या इलाज है? जी इटली का तो वर्स्ट आपने देखा कि since I went to Italy, everybody started getting exposed one after another. तो वो तो सब मुझे को कह रहे हैं कि माँ तुम्ही ने सब कुछ सुना, मैं आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन इट। अभी यहाँ पे जब से मैं आई हूँ दुनिया भर की उछल पुछल हो गई। I didn't do anything, you know, but somehow it is working out. I don't know why. Whenever I go, there's some sort of a exposures. अभी ये बड़ा भारी exposure हो गया, महाराष्ट्र में भी और दिल्ली में भी तमाशा मचा। पर इटली का तो बिल्कुल समझ में नहीं आता। जिस दिन से I purchased a house, जिस दिन से वो घर खरीदा है, उस दिन से ऐसी आफत एक के बाद एक, और अब तो बिल्कुल ही सामने आ गई। वहाँ तो बहुत ही करप्शन, यानी वहाँ का जो एक होता है वहाँ जीपी होता है जो बैठा रहता है या पर्सन हु सेज दैट, तो उसके पास गए तो वही मुझे बताने लगे कि आप ब्लैक मनी कितना देना व्हाइट मनी। मैंने कहा आप बता, हाँ कह लिया nobody wants to pay any tax बाबा ऐसा बोलो, तो बट आई टेल यू बैंक हाउ टू डू दैट। वो खुद ही मुझे एडवाइस कर रहा है, वहाँ ही द ऑफिस इंचार्ज खुले आप, अरे यहाँ से एक स्टेज ऊपर, पर यहाँ बहुत करप्शन। ये जो बॉम्बे में अभी रॉयट्स हुए और ये हुए, व्हाट इज रिस्पांसिबल, हु इज अब यू नो रिस्पांसिबल? इट एवरीबॉडी क्या इट्स अ फैक्ट। इसका क्या इलाज है? हाउ शुड वी डील विद इट? Dealing is, I would say that what we have to first of all see that young people should take it constructively, positively. What can we do about it? You are tomorrow's generation. At least you should not go through with all this nonsense that the people do. Now we are starting here some sort of a Sanskritic, what you call it, you can call it a Sanskritic revival group. In which we think of making people get realization, and they should have music, and they should know dancing, and also they can have plays go around and propagate such. तो सर्जों में क्या पैसा सबको देने का नहीं, कुछ नहीं, जस्ट हैपेंस लाइक दैट। उसके बाद ये जो लोग तैयार हैं, तो सी दे आर पीपल ऑफ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ वेरी हाई आइडियल्स। भैया हमने बहुत अच्छे लोग देखे, आप लोग का नसीब अच्छा नहीं, और हमने बहुत अच्छे लोग देखे। हमारे जमाने के लोग एक से एक थे। अभी हमारे भाई साहब बोलते कि लीजेंडरी थे, चाहे लीजेंडरी हो चाहे प्रामिनिक हो, वंडरफुल, वेरी सैक्रिफाइसिंग। देश के लिए हमारे फादर ने सब कुछ सैक्रिफाइस किया। जब उनको इलेक्शन में खड़ा होना था तो उनका कि मैं अभी नहीं खड़ा था, अभी जेल से आया। वल्लभ भाई ने उनके पास 3000 रुपये भेजे कि आप खड़े हो जाए, तो उनका कि अगर पैसे खर्चा करके मुझे जीतना है तो मुझे नहीं चाहिए। एक पैसा बगैर किए वो खड़े हुए, नॉट ओनली वन द इलेक्शन, उनके जो विरोधी थे, he lost his complete politics, and his own daughter helped my father because I was not there. She was a friend of mine. उसने कहा कि your father is much better than my father. Why should I help my father? ऐसे लोग, इतने noble, इतने अच्छे लोग, we have seen them. But you can now become better in this country. Or we are such a great country. We have such a great heritage. जिस दिन सर्च हो गया आप लोग इस्टेब्लिश करें, दुनिया आपके पैर पे गिरेगी। आप कैंसर ठीक कर सकते हैं, सारी दुनिया भर की बीमारियां आप ठीक कर सकते हैं। अब आप एक हॉस्पिटल बना रहे हैं,
कहाँ? सर्जन हॉस्पिटल वाशी। तीन डॉक्टर्स को सर्जन में MD मिला है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में दिल्ली यूनिवर्सिटी। MD, हाँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी। दिल्ली में बहुत जोर है सर्जन का, बहुत। दिल्ली शहर में कितने लोग हैं? 12,000 के लोग होंगे सर। नोएडा में है ऐसे ही 13-14,000, फिर वो पीतमपुरा में है, हर जगह। और उससे आगे गाजियाबाद में है, लखनऊ में है, फैल रहा है। अब कानपुर में पहुंच गया, बनारस में पहुंच गया। बड़े आश्चर्य की बात है, मैं अमर से महाराज जी संत साधुओं ने तो यहाँ खूब पढ़ाया, और सर्जों की जो जनता वहाँ हुआ है वो तो कमाल की। नॉर्थ इंडिया में तो उनको कुंडली मालूम नहीं थी क्या, तो वो कहते थे कुंडली है कि कुंडलिनी है वही नहीं मालूम था, और वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए। मैं खुद हैरान, और सब प्रोफेशनल्स हैं, एजुकेटेड है, यहाँ तो मास्टर्स होता है। पता नहीं महाराष्ट्र में मास्टर्स पे बहुत हुआ है, पर यहाँ के सो कॉल्ड क्लासेस कोई खास नहीं है मेरी, और वहाँ तो सब क्लास बहुत जोरों में। और अभी हमारा 70th बर्थडे मना रहे हैं और जोर शोर से, जो एक किताब डॉक्टर राय ने लिखी है, साइंस एंड क्या बस नेम ऑफ द बुक, और डॉक्टर राय है। तो उसके लिए उन्होंने किताब लिखी है। Once that book is established, then you'll be amazed to see how Sir Yoga has cured me. Scientific. बुक का क्या नाम है ये? बेटा नाम ये बुक का बुक का क्या नाम है? मैं नाम नहीं याद आ रहा मुझे, पर अभी इनॉग्रेट नहीं हो जाएगी आप लोगों को। इट्स ऑल मेडिकल टर्म्स में है, कैसे उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स की क्या। यहाँ पर वो अंधश्रद्धा वाले हैं ना, वो मेरी जान पड़े, हाँ पता नहीं एक कारण करे। सबसे तो ये हो गया कि प्रोग्राम में हम गए थे और बहुत लोग थे मुंबई में, 10 से 1000, तो पीछे में कुछ लोग बैठे थे, मालूम नहीं कि अंधश्रद्धा वाले बैठे हैं। एक वो मानव सामने आया, तो इतना ऑर्डिनरी इंटेलिजेंस का आदमी भी नहीं पूछा, वो देखा हमें इंटरव्यू देने का, ठीक है आप आइएगा। 3 घंटे पर मैंने सर खत्ती करी, क्योंकि वो समझ भी नहीं आया। फिर मैंने टेप करके उनका भी घर ले जाके इसको समझो, तुम्हारा समझ नहीं। वो जो पीछे लोग बैठे थे, तो हमारे यहाँ किताबें हैं, कुछ तो दिखती है सबको, और एक है सर्जन, तो उन्होंने जा करके और उनसे किताबें मांगी। उन्होंने मना कर दिया कि हम नहीं देते किताब, ये सर्जन जो के लिए। उसको इतना मारा कि 8 दिन बाद वो मर गए। अब किस साइड केम टू नो व्हेन आई केम हियर बैक आफ्टर 3 months। तो मैं नागपुर गई थी, वहाँ भी मुर्दाबाद मेरे लिए इतनी गालियाँ निकालते हैं कुछ। और उसके बाद यहाँ जब हम आए तो भी उन्होंने फिर यहाँ पर जब पहुँचे तो बताया कि देखिए ये मैंने कहा उनके पास ये किताबें कैसी हैं, इस सर जो किताबें लेके आए थे वहाँ। तो उनका वहाँ ये बात हुई, पीछे वो बैठे हुए थे, उनको मारा पीटा, उनसे छीन-छान की। अब वो मर गए, और यंग आदमी 45 years of age with a young wife and 2 children। इतना भूखा उस दिन सारा दिन होती रही, उसका खाना भी नहीं खाया, और फिर प्रोग्राम गए, फिर यहाँ मुर्दाबाद मुझे करना। और फिर कहते हैं कि आप हमारी कुंडली जगह, तो कैन यू चैलेंज मी लाइक, ये तो हम आपको 1 लाख रुपए देते हमारे कुंडली जगह, मैंने कहा 10 लाख दो तो नहीं दो। और फिर उसके बाद उन्होंने, हम लोग गए अंगापुर, वहाँ उन्होंने पत्थर फेंके हमारे ऊपर, तो 18 ये फॉरेनर्स जख्मी हो गए बुरी तरह से। फिर उनको ले गए, ले जा करके वहाँ उन्होंने सबको वहाँ उनके मेडिकल सर्टिफिकेट्स लिए, एफिडेविट लिए, सब कुछ हो गया। और उन्होंने पुलिस वालों को ब्राइब कर दिया, कोई पुलिस आई, यू आर स्टैंडेड देयर इनसाइड। और अब पुलिस वालों को उन्होंने ब्राइब कर दिया, तो पुलिस वाले कहते कि हम नहीं मारा उनको, और वो वहाँ खड़े हुए सारे। ये तो आपका देश है महाराष्ट्र, झूठ की हद। और they are disciples of Rajneesh. They understand. They have learned mesmerism from him, and they want to teach mesmerism. ये सब रजनीश के शिष्य।
रजनीश आप बताइए, इसको दुनिया ने कहा कि नहीं लेना, कहीं बीच में गया तो उसका प्लेन तक नीचे नहीं आने दिया, और इसको आपने खुदा में बिठा दिया पुण्य पटन में। यही तो बड़ा भारी कर्ज है। The whole world has refused to have it. ये गए का प्लेन नहीं लैंड करने, तो पुण्य तो साउंड बॉस को देवा रहा है ना। अच्छा, इनका क्या चलती का नाम गाड़ी, पहले इनके अमेरिकन बड़े डिसाइपल्स थे, फिर फलाने थे, फिर ठिकाने थे, अंत में अब कौन है? तो जर्मन थे, वो भी बात कर रहे हो, मेरे पास आके इनके मार खाए हो। अब कौन है? तो जर्मन, वो भी भाग गए। माता जी, सहयोग में हिप्नोसिस का कोई भाग नहीं ऑफ कोर्स ना, हिप्नोटिज्म के हम विरोध में, तो भूत विद्या से होता है। ये सारी भूत विद्या प्रेत विद्या है, और भूत है, ये नहीं कि नहीं, भूत और ये सब है, पर वो भूत ऐसे नहीं कि शरीर से नहीं होते। वो आप what Rebona is called UPI, UPI is called UPI। जैसे कोई मेंटल ट्रबल हो जाता है, किसी को डिप्रेशन हो जाते हैं, लूनासी हो जाती है, ये सब उसी से होता है। अभी आपके लिए ठक्कर करके हैं, उनकी वाइफ, शी वॉज इन बेड फॉर 14 years, बेचारी इतनी परेशान, शी इज फ्रॉम नेपाल, और यहाँ आधे घंटे उनका वहाँ बात है, शी इज एब्सोल्युटली नॉट, सो मेनी एम्प्टी। So there is some sort of a, you can call it a possession, you can call it a माता जी, फोटोग्राफिक एविडेंस भी हमने काफी देखा है। हाँ, जो फोटोग्राफ खींचते हैं, जब कुंडलिनी अवेकन होता है तो उसका ऑरा नजर आता है। ऑरा रहता है, हाँ। वो तो है। तो ऐसे आपने फोटोग्राफ्स फोटो देखे हमारे? हम कुछ हाँ? छापने के लिए ऐसे कुछ फोटोग्राफ्स अगर मिल सकते हैं तो। कहाँ? To use with our To use with our article। अच्छा, हाँ। हमारा तो बहुत बढ़िया ऐसे फोटो है कि Any normal camera person can, any normal person everybody can- doesn't get it. That's अच्छा। the point. You see, but I think it's a timing. Certain seconds में वो आता है, उस सेकंड में ले लिया तो आता है। ऐसे तो मेरे हार्ट पे भी आए लाइट, मेरे पैर पे आए चंद्रमा, सूर्य पीठ के पीछे में आए, गणेश जी भी आए, मेरे ऊपर गणेश जी आए, हनुमान जी भी आए मेरे ऊपर। आपको मालूम था? मुझे जो भी मालूम है सो है। पर बहुत सारे चमत्कार वो है, सर में जो संस्कार और इतने फोटो है बेटा मैं तुझका, लेकिन हम किसी को दिखाते नहीं इसलिए क्योंकि then people start doubting, चाहे बेटा चाहे। माता जी, this cultural revival group, सांस्कृतिक group that you were talking हाँ। about, when and where are we starting it? I mean tomorrow I have called a meeting, tomorrow. In Pune? Yes, and I am thinking of starting a Sanskritic group in which people should get realization and they should understand, because this is your heritage. You should know this is your knowledge. All other knowledge is from outside. I mean, Mr. Pranamzad Ali is a Muslim, isn't he? He was in London 9 years back, and he was playing very ordinary something. But somebody told me whether you go and he wants to meet you. He had never seen. So I was late. He was playing some sort of a Bengali thing. As soon as he saw me at the door, immediately his hand started moving. And he played Marwa. My husband doesn't like Marwa Rago. But he said, what a Marwa, divine. उसके बाद उन्होंने कहा कि माँ अपने आप ही मेरा हाथ चलने लगा, मैंने कुछ बजाया नहीं, अपने आप चला। Then he brought his 2 children for realization. सिफात उससे सो नहीं होता, वो कहते हैं कि आपसे तो दुआ लेनी चाहिए, because it's creativity. So many become a great artist, musicians, बहुत, लेकिन ये है कि एक यहाँ हुआ, एक वहाँ हुआ, एक we haven't got a list of them, or we have not recorded them. We have no list of people. तो है जो है, सब मस्ती में रहते हैं। Muslims, we have many Muslims also in Sarjogani. We have got Muslims in Australia, we have got Muslim in
And then we have got also some Muslims in Algeria, quite a lot. Algeria में 400-500. And we have got some Muslims in France, Austria. Austria we have. Austria. Hamid. Akbar Hamid, yeah. We have also a school for them. But these foreigners don't want their children to be educated abroad. क्योंकि वहाँ की हालत बहुत खराब हो गई है, बच्चों को सेक्स एजुकेशन देते हैं बहुत खराब है. So now we have started a school in Dharamshala. There will be about 100 children altogether. They are all from abroad, except for 1 or 2 children. But we also admit Indian children who are realized social bachchon. It's a very streamlined, beautiful school where we teach many things to them. जैसे वो घर भी बनाना जानते हैं और तबला बजाना जानते हैं और गाना और आर्ट और सब चीज़. We want to make them very good leaders in their own country. कब से स्थापित है ये स्कूल? मतलब ये स्कूल धर्मशाला वाला हाँ, कब से? ये बताइए. 4 साल. 4 साल हो. It is only for the children of realized souls, Mataji? No, those who are children who are realized souls. Children themselves. And also realized souls के बच्चे realized souls ही होते हैं. जो बच्चे पैदा होते हैं realized souls ही होते हैं. ये भी कमाल है. जाने कितने लोग जन्म लेना चाहते हैं. जितने भी हमारे सहयोगियों की मैरिजेस होते हैं, उनके बच्चे सब बॉर्न रियलाइज्ड. बचपन से अब ये लड़की ये भी अपने को बंधन देना जानती है, ये भी कुंडलिनी का ऐसे करेगी बचपन से. They are born like that. But you cannot force it on. See, you have to ask for it. अब आपके केस में तो it was so easy कि मैं बैठे-बैठे उठा दिया. क्योंकि आप लोगों में desire है. See, if you have that pure desire, it works. This Kundalini is the power of pure desire. बाकी सब desires are impure. Because economics में कहा जाता है, in general, wants cannot be satiated. They are not satiated in general. क्योंकि आज ये चाहिए तो कल वो चाहिए तो. After this, देना. माता जी क्या मैसेज है आपका ह्यूमैनिटी के लिए? अब तो कहते हैं कि सब लोग पार हो जाओ बस और कुछ. एक बार हो जाओ फिर बात समझ में आए. पार हो जाओ. इसका अब आ गया है, टाइम आ गया है. इसके बारे में बहुत प्रेडिक्शंस हैं. रेगुलेशन होगा. बहुत सारे प्रेडिक्शंस हैं. जैसे अपने यहाँ भृगु मुनि आपने सुने होंगे जिन्होंने अपनी एस्ट्रोलॉजी के पायनियर थे. उन्होंने एक नाड़ी ग्रंथ लिखा है. उसमें एग्जैक्टली 1970 से ये सहयोग शुरू हुआ बताया. अच्छा. थियरी बहुत कुछ बात उन्होंने कही. कुंडलिनी का जागरण होगा, हॉस्पिटल्स की जरूरत नहीं रहेगी, सब भृगु संहिता. या भृगु संहिता भृगु मुनि थे. उन्होंने भृगु संहिता तो एक लिखी और एक किताब है नाड़ी ग्रंथ. ये उसका ट्रांसलेशन एक भगंदर कोई थे साउथ उन्होंने. ये तो पहले की बात बता रहे. माता जी विलियम ब्लेक का आपने नाम सुना होगा. उन्होंने भी किया. उन्होंने बहुत जो हमारा घर था उसका तक डिस्क्रिप्शन किया. ये बता नहीं वहाँ लंदन जो हमने घर बनाया था उस घर का तक डिस्क्रिप्शन और जो आश्रम है उसका तक डिस्क्रिप्शन. नेक्स्ट लोग एक लुइस ने उन्होंने तो बिल्कुल हमारे प्रोसेशन का इतना सुंदर वर्णन. वो विजन किताब हो गई इन लोगों को दे दी के. और सबसे तो बड़े आपके रविंद्रनाथ उन्होंने तो पूरा डिस्क्रिप्शन दिया कि ऑन द शोर्स ऑफ भारत. यहाँ गणपतिपुरे में हमारा सारा प्रोग्राम होता है. उसमें सारा डिस्क्रिप्शन कैसे कैसे लोग बाहर से आएंगे और कैसे कैसे वहाँ मिलेंगे. ऑल रेसेस विल कम एंड द मदर इज अवेकन्ड. का गाना बड़ा प्रसिद्ध है. अच्छा, बंगाल में भी सहयोग काफी.
माता जी लेकिन ब्रुगस अमृता जो ओरिजिनल है वो भी खाली फ्रेगमेंट्स में है ना? उनकी ब्रुगस अमृता पूरी ओरिजिनल जो है इट हाँ, इज वो लॉस्ट। अलग अलग है, पर ये तो किताब थी, एक किताब सी है भृगु। उसकी भृगु संहिता यहाँ एक है, वहाँ एक है, हर जगह बनारस में है, एक मेरठ में है, ये है। पर उसमें इस मामले में नहीं लिखा हुआ खास, जो इसमें भृगु संहिता की नाड़ी एक चीज, ग्रंथ। और ये है दूसरी चीज, जिसे कि ये नाड़ी ग्रंथ है। इस नाड़ी ग्रंथ में उन्होंने आध्यात्मिक चीजें, जैसे एस्ट्रोलॉजी में भी, जैसे जनरल लोगों को एस्ट्रोलॉजी जैसे करते हैं, और एक एस्ट्रोलॉजी है कृष्णमूर्ति पद्धति, उससे इनकारनेशंस की, दशास्त्र। हाँ, तो वो हमारा सब हो गया, और उसको सब हो गया, वो फिर भी अब छिपा नहीं सकते, हम भी क्या करें। Otherwise, to look at as a simple housewife. And I have 2 daughters and 4 grandchildren. Mataji, are you concerned with rebirth, the cycle of rebirth? Of course, there is, no doubt. लेकिन आपका ये बड़ा कंसर्न है कि About myself, हाँ, हाँ, शरद योगी, ages से भी, ये कंसर्न तो बहुत, इससे हमें छुटकारा नहीं प्राप्त करना चाहिए? इससे कंसर्न से, नहीं, ये rebirth, cycle of rebirth. नहीं, फिर उसके बाद you become free, and you can anytime take your birth, if you want, anytime. Now you have a free day, but you will, because you would like to save the world. इससे छुटकारा फिर पाने का, अब छुटकारा तो हो गया, बिल्कुल छुटकारा हो, जब उससे अटैचमेंट ही नहीं रह गया। आप देख रहे हैं सब चीज नाटक, जैसे नाटक में बैठे हैं आप, तो आपको क्या लग रहा है, if there is some problem, आप सोच रहे हैं क्या नौकरी आ रही है, बस द नाटक इज ओवर, यू नो इट्स अ नाटक, तो ये सब नाटक होगा। जैसे कि आप पानी में खड़े हैं, वेव्स आ रहे हैं, आपको तैरना नहीं आता, तो आप घबरा रहे हैं, लेकिन आप बोट में बैठ गए और फिर आपने स्विमिंग सीख लिया, तो आप बचाएंगे नहीं लोगों को। ऐसी ये स्टेज है। रीबर्थ का तो चक्कर खत्म हो, आप चाहें तो बस जन्म लो, नहीं तो नहीं लो, पर आप जरूर चाहेंगे। तो सहयोग में माता जी मोक्ष का क्या स्थान है? अब हो गया मोक्ष, और यहीं पे मोक्ष है। यही तो मोक्ष, यही मोक्ष। Realization itself is enough. Yes, but it has to grow. It has to grow to that state where you become doubtlessly aware. You become samadhi में उतर आए। उसके बाद फिर you start doing everything. Never feel you are doing it. It just works automatically. Why travel so much? Everybody says you travel. I said I don't travel. I am just sitting there. Just I'm sitting here in the chair, I'm sitting there also. But if you think you are traveling, then you are traveling. Otherwise, you are not traveling. माता जी पूना में रजनीश और ये जो काफी स्प्रेड हो गए, पूना में रजनीश के जो डिसाइपल्स काफी स्प्रेड हो गए और बढ़ते जा रहे हैं, तो उसको काउंटर ये कर सकते वो सब तो मार खा के आते हैं, रिपोर्ट है, सब मार खा। ये हमारे 3 रजनीश के शिष्यों को मेरे पास लाना था। मैंने कहा घर पे ले आओ, प्रोग्राम में बता। अभी सुना नहीं दिल्ली की बात, वो आए सामने और अबाउट 100 फीट आए। मैंने नजर उठा कर उनके सिर्फ देखा, तो तीनों को तीनों धड़ाम से जमीन में गिर गए, पत्थर के जैसे। अब उठाना मुश्किल, तो उनको यूं करके वो बाहर जिसको उस तरह से लकड़ी से हिला हिला करके उनको बाहर बिल्कुल लोट पोट होते हुए पहुंचे, पत्थर के जैसे। पूछे बैठे पे सब लोग बिगड़े कि क्यों लाए इनको, जब माँ ने मना किया तो लाए गाय को आप यहाँ। इनको क्या मालूम कि जिन्होंने अपने इनका आश्रम है, मेहर आश्रम धर्मशाला, उसमें लिखा कि नो रजनीश डिसाइपल इज अलाउड। तो इनसे लड़ पड़े, आए अंदर तो अच्छा माँ के फोटोग्राफर को लगे दर का
सब मार खाएंगे तब आए। हमारे इसमें बहुत सारे शिष्य आए, एक तो बेचारा ना पागल हो गया था कुछ कुछ हो गया, अब नाउ ही इज डन हिज PhD, रॉबर्ट नाम उसका, बहुत से हमारे से फ्रॉम बेल्जियम ओनली, फ्रॉम बेल्जियम। Another is this fellow, Richard. He was very badly off too. वो तो पगला गए थे। TM के लोग तो रिक्लूसेस हो जाते, उनके भी कितने तमाशे। अब तुम ही सोचो कितने गधे हैं बेचारे, उनको कुछ पता तो है नहीं, इनसे 300 पाउंड पहले की, और इनको क्या हम तुमको ऐसा मंत्र देते कि किसी को मत पता। क्या मंत्र? TM। अब ये बेचारे इनको कुछ मालूम था नहीं, मंत्र क्या था। तो अब एक क्रिश्चियनिटी से निकले तो एक से निकल के दूसरे में पड़ गए, तो उनका एक मंत्र है इंगा, एक है पिंगा, एक है ठिंगा। तुम्हें तो हंसी आ रही बेटा, लेकिन ये लोगों को मना का था कि किसी से मत पता, किसी से नहीं पता। फिर उसके बाद उनको फिर से 6000 पाउंड, सोचिए कितना बेवकूफ बनाया बेचारा, 6000 पाउंड दिया और उनको कहा कि आप वहाँ आइए स्विट्जरलैंड में, और वहाँ हम आपको सिखा देंगे इस तरह से मेडिटेट करने का, 3 फुट जमीन से उठने की क्या जरूरत है आपको, और सब दूर आप चलेंगे घूमेंगे। मैंने कहा ऐसे ही इतना जाम है रास्ते में, और क्या कोई 3 फुट चलने वाले लोग, बहरहाल जो भी हो ऐसे चूका। अब 6000 7 दिन का कोर्स, उसमें से 5 दिन तो आपको आलू उबाल के उसका पानी पीना, उसके बाद उसका जो छिलका है उसे आपको खाना, और 7वें दिन आपको आलू खाना, और उसके बाद फोक बिछा रहता था। यार फॉलोइंग में आएगा उस फोक पे कूदने, और उनके सबके बॉटम्स टूट गए। उन्होंने फिर उनको ये किया, केस के ऊपर पैसे भी दिए, 6,000 पाउंड लेके ये लगे। और बड़े बड़े बैरिस्टर्स हमारे इसमें, उस वहां से एक बैरिस्टर आई हुई बेचारे, टेस्टा वाज देयर, रबत है, you didn't know TM, did you? ऐसी हालत। अब बताओ इन दुष्टों को क्या, और खूब लूटा उनको, लूट लाट के। अभी इज अ ग्रेट मार्केटिंग मैन, अभी वो मार्केट कर रहे हैं क्या, तो आपका आयुर्वेद, उसके लिए इसकी क्या जरूरत है। और इनके जो ये लेविटेशन का जो ग्रुप था, उसका नाम था फ्लाइंग एकेडमी, और वो थी स्कॉटलैंड में, रौनक नाम के वहाँ पर रौनक नाम का एक वहाँ बड़ा भारी वो था लेक, उसके किनारे बेचारा वो एक डायमंड मर्चेंट, उसकी बीवी जो थी ग्रैंड डॉटर ऑफ अ ड्यूक, उनको फंसा करके और वहाँ रखा, और सब इनको कूदने के लिए सिखाया। फिर उससे ये बताया कि तुम ये कहो कि तुम इसमें से चले जाते हो, तुम कैन पास थ्रू अ वॉल। तो मैंने कहा तुमने क्यों कहा कब? पहले माँ इतना पैसा मेरा इन्वॉल्व था, व्हाट हैव आई टू डू? उसने कहा कहने में कोई अर्ज नहीं, ग्रेजुअली वी डिड। जब फिर वो गए अमेरिका में उनसे गप मारने गई कि मैं विदाउट वीजा आई थी, वहाँ से ध्यान में मैं यहाँ। अच्छा वो सब अमेरिका से विश्वास कर गए, हजारों अमेरिकन से कितना रुपया इन्होंने कमाया, कुछ इसकी कोई हद नहीं। मुक्तानंद उनके पास 600 करोड़ के डायमंड्स, सोचिए। और उनकी लड़की है जो माई है, वो उन्हीं की लड़की है। उनके जो सेक्रेटरी थे देसाई, वो आए थे मेरे पास, वो सब बता रहे थे इनका कच्चा चिट्ठा। एक तो बात पहले ये लिख लेनी चाहिए कि आप पैसा नहीं दे सकते, परमात्मा पैसा नहीं जानता। हाँ ठीक है, आपको हॉल लेना है, उसका पैसा दो, समझ गए, वो दूसरी बात। आप कोई खाना खाना है, उसके पैसे दो, ठीक है, पर आप कुंडलिनी जागरण का पैसा नहीं दे सकते, स्पिरिचुअलिटी का पैसा नहीं। ये अगर आप लिख लें तो सब ये खत्म हो जाए 2 दिन। इन लोगों के एक एक करामात में लिखा हूं, तुम लोग हंसते हंसते लोग फोटो, पर हंसते भी और रोना भी आता, क्योंकि इतने लोगों का जीवन खराब किया है इन्होंने। लोगों ने अपने घर भेज दिए, बच्चों को स्कूल से निकाल लिया, और इन दुष्टों ने खूब अपनी जेब में भरा।
इसका भला नहीं। अपने बड़े बड़े सरकारी लोग उसमें शामिल थे, वहाँ जाते थे और बता रहे थे कि they were brought by planes and things, और वहाँ औरतें उनको देते थे। यहाँ तो नहीं, यहाँ भी बहुत बड़े बड़े लोग आते हैं। बिल्कुल उल्टा मार्ग इसी धर्म में लिखा है क्या। अभी रजनीश की एक फिल्म आपको दिखाएंगे, तो उसका नाम है मैं गॉड पुराना। वो एक यहाँ पर आदमी आता बीबीसी का, उसने एक छोटा सा छेद करके उसमें पता नहीं कैसे डिवाइस से गंदी फिल्म है कि न, सब नंगे औरतें नंगे आदमी आम सारा प्रकार था। मैंने तो भैया थोड़ा सा देखा, हमारे शास्त्र साहब को 1 मिनट हो गया, थोड़ा सा देखा तो उसके बाद 8 दिन तक उल्टियाँ ही आती थी मुझे, चाय तो लोग परेशान हो गया। अब इन्होंने क्या किया कि उसको खरीद ली, जो परचेज है, so that it should not be shown. You have it. Let's not get. हमारे आप बात सादा चाहते हैं? जी। आप भी ये वाला नहीं पिएंगे, वो शायद दूध नहीं। ठंडा हो गया होगा। हाँ, परत करूँ ना? नहीं। ठंडा डाला से। दूसरा क्यों? हाँ, दूसरा ला। दूसरा लेते हैं। दूसरा ले। ये बिल्कुल ठीक है एकदम माता ठीक जी। तो और एक कप ले Absolutely लेना, fine. क्या चाय तो। माता जी पुण्याला कधी प्लेस बेटा आमचं झालं ना प्रोग्राम? आता नियर फ्युचर मध्ये आता मी going now to, I'm going abroad now, on the minor side. I come back in November. और आपका ये प्रोग्राम तो जनवरी में होता है ना? जी। जनवरी। येऊया तुमच्या मित्र मैत्रिणी लेखी सुना सही। नहीं, अब you have to wait a year. हम दिल्ली में आना चाहते हैं 21 तारीख को, आपके जन्मदिन पे। हमारे क्या? जन्मदिन पे। They want to attend your birthday celebration day. Oh, very good. जन्मदिन। 70वां जन्मदिन है, ये लोग इतना उसका तमाशा किए हुए हैं कि कुछ नहीं। Of course. You can come. It's a 5 days program. They'll organize for you everything. बता देना। Yeah. ये तो वंडरफुल लोग कहाँ से उठा के लाए थे? मैं तो कह रही थी भैया वो पता नहीं कौन आ रहे हैं, क्या करेंगे उनको। वाहियात पक्का जा सकता, जर्नलिस्ट को पेनिट्रेशन होना चाहिए। You know, it's a very big responsibility for journalists. You know, it's very important. These days, journalists are the most powerful. And if they do not have a witness state, they will never be truthful. और कुछ के कुछ लिख देंगे, इतना उठपटांग लिख देंगे कि which will have no connection with reality. ऑब्जेक्टिविटी नहीं होती। ऑब्जेक्टिव नहीं, ये ट्रेनिंग की गड़बड़। ऐसे कैसे? अब जैसे एक आई थी बच्ची कर, उसे तो लिखा नहीं, देन अनदर मुस्लिम लेडी रोट, आई नो दैट। बच्ची कर बच्ची कर लिया थे, उसने कभी कोई पढ़ा नहीं, कभी सब कुछ नहीं, नो रिसर्च, व्हाट शी रोट, यू नो that I was very वो जॉय पर। अच्छा, I never known this जॉय पर। तो वो भोगरी के फूट पड़े थे, उसकी खुशबुआरे हुई उसको, तो उसने कहा जॉय पर। ये मजा है बहुत सामान्य मटन में, वो जॉय पर मुझे कभी ला दे वाली। अब कुछ बेकार किए तो तो पेनिट्रेशन होना चाहिए। एंड आई थिंक इंडिया के अगर जर्नलिस्ट, आई मस्ट से देयर आर सम वेरी गुड जर्नलिस्ट, जैसे शोरी है, वेरी पेनिट्रेटिंग, बहुत सारे ऐसे। उनको रियलाइजेशन मिला। हाँ, अभी अभी आए थे, ऐसे बहुतों को हो गया, लेकिन अब रियलाइजेशन के बाद विल बी क्वाइट बैलेंस, आई एम श्योर। तेरा वो बहुत नाराज है बिकॉज ऑफ दिस कश्मीर प्रॉब्लम आल्सो। जस्ट नॉट कश्मीर में जो लोग मारे गए और वहाँ पर आकर
क्योंकि इतनी पर्सनल हो गई ना बात, बहुत नाराज है। लेकिन ये सब बाहर से टीका टिप्पणी करने से कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं। ये अंदर से जब तक हमें परिवर्तन नहीं आता, जब तक हम ऐसे सॉलिड लोग नहीं हो जाते, तब तक कोई डेमोक्रेसी कहीं नहीं चल सकती। लेकिन सहयोगी ब्यूरोक्रेसी और जर्नलिज्म और ऐसे फील्ड में बहुत जरूरी है। काफी ब्यूरोक्रेट्स आ गए, but they are the most difficult and the worst are politicians. Worst are politicians. But bureaucrats we have. We have many bureaucrats now in Delhi. We have many bureaucrats. My husband was a bureaucrat also. Yeah. Or is like now he's very much changed. अब जानते हैं मेरे हस्बैंड के बारे में, लेकिन फिर भी क्या? बानी का था। I mean, he was here, corporation chairman थे, शास्त्री जी के वो ऑफिशियल सेक्रेटरी थे, उसका भी was elected to UN as secretary general of IMO, International Maritime Organization. He was there for 16 years. 16 years तक वहाँ थे, और he also got KCMG, the highest award from the Queen. बोला उन्होंने लैंकेस्टर हाउस में बहुत बड़ा बैंक्वेट दिया, बहुत करोड़ के। मतलब आई मस्ट से इंग्लिश में ये बात है, इसे मेरे देख के माय हस्बैंड इज एन इंडियन एब्सोल्युटली आउट एंड आउट, इज अ ग्रेट देशभक्त, तो उनका इतना मान किया। और पार्किंसन ने कहा कि आई हर्ड अबाउट रीजन्स, आई नेवर सीन वन, बट टुडे आई एम लकी टू सी वन सिटी हियर। इस तरह से हमारे बहुत बहुत मानता हूँ और इस वर्क यहाँ भी बहुत मान रहा हूँ, उनको भी पद्म भूषण वगैरह मिला था, ऑनेस्टी, बहुत ऑनेस्ट आदमी। और यही हमने शादी में कहा था कि एक चीज़ करना कि तुम शराब मत पीना, मेरे बस का नहीं शराब, और दूसरी है कोई बेईमानी चीज़ होता मेरे बस कुछ है, आपका भूख को मचा हो जाए, बेईमानी नहीं। वो तो इतने ज़्यादा ऑनेस्ट है कि कभी कभी उसकी जैसे मैं सनी रॉय हूँ, हमारे यहाँ सब ऐसे ही आए, एक से बढ़ के, वो तो सनी लॉ जाने। One of them is Romel Verma. His name is Romel, but he is from Bihar. And Rajan Babu के वो grandson होते हैं एक तरह से. But he has written a book about, क्या नाम है किताब का? Himalayas. हाँ, he was mountaineering का बहुत शौक था उनको, और उसमें उन्होंने कुंडलिनी पर भी लिखा था, डिस्पाइट सीख है, अच्छा लर्नर। मैंने उनको लगा दी बीमारी पढ़ने लिखने की, सारे पुराण पढ़ो, ये पढ़ो, वो पढ़ो, तो लगा। उसके अलावा ये थे जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर शिपिंग कॉर्पोरेशन। My younger daughter took journalism. She's the first class first from Bombay University, Asian Indian Culture Affairs. तो उन्होंने लिया, अब छोड़ दिया। उनका नाम है साधना वर्मा, लेकिन अब छोड़ दिया। वो उसके साथ क्या नाम है उसका, अय्यर देखा राजीव गांधी के साथ थे, है ना? मणिशंकर अय्यर। राजीव गांधी अय्यर, मणिशंकर, उसकी वाइफ के साथ जो कहती थी कि अम्मा महाराष्ट्र से 2 गेंडे तुमने यहाँ क्यों भेजे? एक तो चवाड़ साहब और दूसरी माता जी, अगर हमारे पॉलिटिशियंस अगर रियलाइज हो जाए, हाँ? हमारे अगर लीडर सहज योगी बन जाए तो काफी चेंज आ जाएगा, और तो बनते नहीं है। बेटे इन लोगों के लिए पता नहीं ये कहाँ की जीव है, मुझे समझ में नहीं आता। ये कुछ अजीब चीज है, बहुत अजीब सी लोग हैं। एक बार उन्हें जागृति हो जाए तो वो फिर गलत काम नहीं करेंगे। तो बेटे तुमसे क्या बता रहे, मेरे अब ये तुम रिकॉर्ड नहीं करो तो बताओ, मेरे ब्रदर हैं, मेरे ब्रदर
उनसे मैंने कहा कि भाई तुम सहयोग क्यों नहीं करती, तो कल मैं तो कर नहीं सकता। मैं कहा क्यों? कल लगे कि मैं तो मुझे झूठ बोलना पड़ता है। मैं कहा झूठ क्यों बोलना पड़ता है? कल मैं पॉलिटिशियन हूँ। करियर प्लानिंग में तुम्हें क्या क्या है? इकोनॉमिक्स? मैंने हिस्ट्री किया था, एंशिएंट इंडिया। हिस्ट्री? एंशिएंट इंडिया। उसके बाद में जर्नलिज्म किया, उसके बाद मैनेजमेंट की, अभी लॉ कर रहा हूँ फाइनल ईयर। लेकिन वो ऐसे ही है, मतलब हॉबी के इससे। नहीं, कुछ भी हो, अपने देश के मतलब ख्याल से कोई अगर IAS में चला जाए और ऑनेस्टी से रहे तो रह सकता है। ऐसे आजकल तो बहुत तनख्वाहें हो गई, कोई ऐसी बात नहीं। और अगर आपके बहुत अभी भी आई नो ऑफ सो मेनी, दे आर एब्सोल्युटली ऑनेस्ट, बहुत से लड़के ऑनेस्ट है। हमारे ज़माने में तो कलेक्टर, मैंने हम कभी सुने भी नहीं कि कोई कलेक्टर पैसा खाता है। इवन डिप्टी कलेक्टर कभी सुना नहीं। ये तो पट्टे वाले 1 2 रुपया लेते थे। कभी जैसे कहने कि कान पे भी खबर नहीं आई कभी, ऐसे ज़माने के हम लोग। लेकिन अब तो सुना है सब गड़बड़ है। मुझे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है हार्ट और माइंड में, पेरेंट्स के साथ। मतलब जो पेरेंट्स क्या कहते हैं? बिजनेस है, काफ़ी इस्टेब्लिश है, हाँ। और मैं एल्डेस्ट हूँ, लेकिन आई वांट टू डू समथिंग फॉर द कंट्री वेरी स्ट्रांगली। आई फील अपने आप मार्क आ जाएगा, हम बता देंगे आपको, मार्क निकल आए। हमारा तो विचार ये है कि यहाँ से बहुत से सहयोगियों को हमने बाहर भेजा, सहयोग आते हैं, और बाहर से ये लोग यहाँ शादी करके आए कर रहे हैं, और वहाँ बहुत अर्निंग्स है। हर एक आपने लॉ किया है? हाँ जी, लॉ किया फाइनल है। और मैं एस्ट्रोलॉजी और पामिस्ट्री, हाँ? एस्ट्रोलॉजी पामिस्ट्री और ये भी शौक रखता हूँ। एस्ट्रोलॉजी में है? हाँ जी। अब एस्ट्रोलॉजी कोई ज़रूरत नहीं है, अब आप जो कहेंगे वो होगा, कोई ज़रूरत नहीं एस्ट्रोलॉजी। और एंशिएंट इंडियन कल्चर की क्या अच्छी बात है, वेरी गुड थिंग। I stood second in the university in that subject. आजकल बाहर सब इकोनॉमिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, अकाउंटेंसी ये वो सब कुछ है। इवन लॉ, ऑस्ट्रेलिया में कितनी लॉ चा सेक्टर Management नो सब्जेक्ट आणखी गेले की त्याच्या लॉ मध्ये तुम्ही होता जी शोनाली जी, आणि स्पेशली जर मास्टर्स केलं असेल, आप अगर LLM करें तो फिर रिकग्नाइज ज़्यादा एक्सटेंड होता है। ये बहुत मतलब रिस्पेक्टेबल है। लाइक जो इंडिया में 1920s 30s में जो रिस्पेक्ट थी लॉ की, जब गांधी जी ने किया था, तो वैसी रिस्पेक्ट अभी वहाँ पर है। लॉ में इंटरेस्ट है आपको? Not really. मुझे भी नहीं है। मेरे को इंटरेस्ट है लॉ में। मेरे को हिस्ट्री और इसमें काफी इंटरेस्ट, हिस्ट्री में आपको लेखक होना चाहिए बेटी, जर्नलिज्म इज द सब्जेक्ट फॉर यू, लेखक होना चाहिए।